ॿाहिरि ॿोली हंज जी अंदरि कारो कां, ॿाहिरि ॿोली हंज जी अंदरि कारो कां, अहिड़ो ठल्लो थां भनी छो न बोहरा कजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भली कार आहे तव्हांखे इल्म जे सफ़र जे प्रोग्राम में पंहिंजी मेज़बान डॉक्टर कंवल मेमण सां गॾु। उम्मीद आहे सभु ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदा। नाज़रीन, इल्म जे सफ़र जे बारे में आऊं बि चंद सिटरूं बयानु करणु चाहींदसि त इल्म जो सफ़र जेको आहे कंहिंजे लाइ आसान थिए थो, कंहिंजे लाइ मुश्किल थिए थो, ऐं अहिड़ो सफ़र आहे जेको अणखुट आहे। मज़ो वठी करे तव्हां सफ़र कयो हिनखे, ऐं कंहिंजे लाइ पंहिंजो पाण पंहिंजे बलबूते ते हिनखे तय करणु आसान थी वेंदो आहे त कंहिंजो सहारो वठी करे कोई हिनखे पार कंदो आहे। नाज़रीन, इल्मु हासिलु करणु हिकिड़ी बुनियादी ज़रूरत आहे। इल्मु जेको आहे, इल्म जे वसीले ई शहूर अचे थो, इल्म जे वसीले तव्हां में इख़लाक़ अचे थो, इल्म जे वसीले तव्हां शयुनि जी सोच रखो था ऐं उन सोच जे वसीले तव्हां फ़ैसिला करे सघो था। जी नाज़रीन, ऐं उहे फ़ैसिला तव्हांखे समाज जी, पंहिंजे ख़ानदान जी, पंहिंजी तरक़ीअ में कमु अचनि था। लेकिन नाज़रीन, अफ़सोस सां इहो चवणो थो पवे त असांजे पाकिस्तान में इल्म जी खोट आहे। इल्म जी जेका आहे अंग अखरनि में परेशानी थिए थी असांखे। पाकिस्तान में ॾिसूं, निजी तौर ते अगरि असां ॾिसूं था त तक़रीबन 59% जेका आहे उहा इल्म जी खोट आहे। ऐं असां इनफ़रादी तौर ते ॾिसूं था त शहरी ऐं देही इलाइक़नि में मर्दनि ऐं औरतुनि में उन जी शरह केतिरी आहे त मर्दनि में ॾिसूं था त 70% आहे, औरतुनि में ॾिसूं था त उहा तक़रीबन 45% आहे। वरी ईअं ई शहरनि में ॾिसूं था त उहा 70% आहे ऐं देही इलाइक़नि में ॾिसूं था त 49% आहे। त नाज़रीन, उन खां अलावा जेकी ॿार स्कूलनि खां महरूम रहनि था, उन्हनि में बि 22 मिलियन ॿार जेके आहिनि उहे पंहिंजी तालीम खां महरूम रहनि था। इन्हनि सभिनी शयुनि खे ॾिसी करे नाज़रीन, हिन प्रोग्राम जो असां आगाज़ कयोसीं त इल्म जे वसीले असां माण्हुनि में हिकिड़ो शऊर पैदा कयूं त इल्मु तव्हांजे लाइ हिकिड़ो बुनियादी अंसुर आहे। इल्मु हासिलु करणु तव्हांजी ज़रूरत न आहे, इल्मु हासिलु करणु तव्हांजी हिकिड़ी एतिरी ज़रूरत आहे जंहिंजे वसीले तव्हांखे हिकिड़ो शऊर मिले थो त तव्हां पंहिंजे फैमिली में, पंहिंजे ख़ानदान में कीअं रहो। नाज़रीन, इन जे ई ज़रिए असां पंहिंजे महिमाननि सां ऐं बहितरीनु महिमाननि सां, पंहिंजे पैनल सां बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं ईअं ई चवंदा आहिनि त इल्मु जेसि ताईं कम जो न आहे, जेसि ताईं तव्हां उन ते अमल नथा कयो। इन जे वसीले हिकिड़ी हदीस बि आहे त तव्हां तेसि ताईं आलिम नथा थी सघो जेसि ताईं तव्हां इल्म मां अमल नथा कयो। नाज़रीन, असां सां गॾु तमामु बहितरीनु महिमान मौजूदु आहिनि जेके तालीम जी दुनिया में, तहक़ीक़ जी दुनिया में बिन अक़वामी सतह ते हिकिड़ी शोहरत हासिलु कयल आहे। नाज़रीन, आउं ॻाल्हि कयां पई प्रोफेसर डॉक्टर फैसल क़दीर जी, जेके पाण हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऐं द कॉलेज ऑफ पंजाब लाहौर जा जेके आहिनि उहे प्रोफेसर जे तौर ते ख़िदमतूं सर अंजाम ॾियनि पिया। ऐं उन्हनि जो तहक़ीक़ जो जेको उनवान आहे बेसिकली ख़ासि तौर ते ऑक्यूपेशनल बिहेवियर ते आहे, ऐं उन खां अलावा जेको आहे ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजमेंट ते आहे, बिहेवियरल मैनेजमेंट ते आहे ऐं रिसर्च मेथड्स ते आहे। जी नाज़रीन, उन्हनि खे भलीकार कंदासीं ऐं उन्हनि जो शुक्रगुज़ार रहंदासीं त उहे ख़ासि तौर ते असांजे प्रोग्राम में शिरकत जे लाइ लाहौर खां कराची ट्रैवल कयो अथऊं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और इल्म के सफ़र को प्रमोट करने के लिए। आपका शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। जी नाज़रीन, उन खां बाद में असां सां गॾु महिमान मौजूदु आहिनि जेके पाण तालीमदान, तहक़ीक़दान, मुहक़िक़ जंहिंखे चइजे। जी असां सां गॾु महिमान मौजूदु आहिनि डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुर्रहमान जिस्काणी, जेके तमामु मशहूरु पर्सनैलिटी आहिनि ऐं जेके स्टील कैडेट कॉलेज जा अॻूणा प्रिंसिपल बि रही चुका आहिनि। माशाअल्लाह सां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जी शाइरी में जेके आहिनि उन्हनि जे टाइटल जे मुताबिक़ उन्हनि जो हिकिड़ो मक़ालो आहे जेको तमामु घणो मशहूरु थियो आहे इस्लामी क़दर जे उनवान हेठि। ऐं पाण सर जन जेके आहिनि वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में सिंधी शोबे में शागिर्दनि खे PhD जी तालीम ॾियनि पिया। माशाअल्लाह सां उन्हनि जी मदद सां केतिरा ई शागिर्द जेके आहिनि PhD जी तालीम सां नवाज़ी चुका आहिनि। भलीकार कयूं था उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में, इल्म जे सफ़र जे प्रोग्राम में तमामु बहितरीनु उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल बि थींदी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कीअं आहियो सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो भलीकार आहे तव्हांखे इल्म जे सफ़र में। तव्हांजी महिरबानी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, तव्हां हिते आयो, तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो। न न, असांजी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, इल्म जो सफ़र में असां बि शामिल थी आहियूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, महिरबानी।
जी नाज़रीन, तमामु बहितरीन कचहरी कंदासीं। पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ कंदासीं। सभिनी खां पहिरियां असां पुछंदासीं प्रोफेसर डॉक्टर फैसल कदीर खां। जी सर, मुझे बताइएगा कि आपका इल्म का सफ़र कैसे गुजर रहा है अब तक, शुरुआत से अब तक का कैसे गुजर रहा है? ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। पोस्ट पीएचडी और है सिनेरियो, प्री पीएचडी और सिनेरियो है, बचपन से और सिनेरियो है। तो ये जो इल्म है ये तो ज़ाहिर है ज़िंदगी है मेरी। तो अगर ये बहुत अच्छा गुजरा सफ़र, ये वो काम है जो आपको, यानी कि ये बात पता करने में ज़िंदगी में करना क्या है, काफ़ी सारे साल लग गए। जब पता चल गया कि मेरे लिए इल्म का रास्ता ही सही रास्ता है, तब से तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरे ख्याल में मैं करने के लिए दुनिया में आया था। बिल्कुल सही बात है। जी सर, सर अब्दुर्रहमान, तव्हां ॿुधाइजो त तव्हां जो तदरीसी ऐं तहक़ीक़ी दुनिया में कीअं पेर पातो, कीअं तव्हां हिते शुरुआत कई? डॉक्टर साहब माशाल्लाह ही जेको तहक़ीक़ जी दुनिया आहे या त अलॻि अॻु में इल्म जो सफ़र आहे। ऐं मां चवंदुसि मुंहिंजी ख़ुशनसीबी आहे जो मूं हिकिड़े उस्ताद जे घर में अखि खोली। बिल्कुलु, मुंहिंजा वालिद साहिबु जेको आहे सो टीचर हुया माशाल्लाह। ऐं उतां ई तरबियत जो सिलसिलो शुरू थियो, तालीम ऐं तालुम जो सिलसिलो शुरू थियो। ऐं इहो सफ़र जॾहिं अॻिते वधियो पोइ जेको आहे आहिस्ते आहिस्ते जेको आहे आलिमनि सां उस्तादनि सां मुलाक़ातूं थियूं, उतां रहनुमाई मिली। ऐं ख़ुसूसी तौर ते जेको आहे कराची यूनिवर्सिटी में जेके नाला त घणा आहिनि, लेकिन डॉक्टर मरहूम अयाज़ कादरी साहब ऐं डॉक्टर नवाज़ अली शौक़ साहब जहिड़ा महिरबान मुहक़क़ ऐं आलिम मिलिया जिन तहक़ीक़ ॾांहुं जेको आहे सो रहनुमाई कई। ऐं पोइ उतां अॻिते पंहिंजो आहिस्ते आहिस्ते सफ़र शुरू कयो ऐं जेको अञा जारी आहे असांजो, यानी ईअं सम्झो त मुकमिल न थियो आहे। तालीम जो सफ़र जेको आहे जीअं त हुकुम आहे, हदीस शरीफ़ आहे त माउ जी झोली खां वठी क़बर ताईं इहो सिलसिलो जारी रहंदो। ऐं को बि माण्हू डॉक्टर साहब या असां या तव्हां पीएचडी कंदा आहियूं त हिकु हिकु उनवान हूंदो आहे, टॉपिक हूंदो आहे, उन टॉपिक ते करे ई असां जेको आहे मकालो मुकमिल करे डिग्री अवार्ड थींदी आहे। लेकिन हक़ीक़त में जेको आहे सो उहो हिकु नुक़्तो हूंदो आहे, हिकु पॉइंट हूंदी आहे। इल्म जो सफ़र तमामु वॾो सफ़र आहे ऐं उहो ख़तमु थियण जहिड़ो आहे ई कोन। सो इन जे करे इहो सफ़र जारी आहे ऐं जारी रहंदो, मरण घड़ी ताईं जारी रहंदो। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। नाज़रीन, गुज़िरियल हफ़्ते असांजो उनवान हुयो इल्म जे सफ़र जो ई, त पंहिंजो शोबो जेको आहे उहो कीअं इख़्तियार कजे, कीअं तव्हांखे उनखे ॻोल्हणु खपे ऐं कहिड़े शोबे में वञणु खपे। उनखे ॾिसंदे अॼु असां उन शोबे मां हिकिड़ो टॉपिक कढी आया आहियूं त तहक़ीक़ ते ॻाल्हाईंदासीं। पाकिस्तान में, असांजे पाकिस्तान में तहक़ीक़ जी कमी आहे, चाहे उहा सोशल साइंस ते हुजे, चाहे नेचुरल साइंस ते हुजे, चाहे लिटरेचर में हुजे या चाहे मेडिकल साइंसिस में हुजे। उन जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं त तहक़ीक़ केतिरी लाज़मी आहे, छो जो असां सां जेके माहिरीन मौजूदु आहिनि उहे तहक़ीक़ सां वास्तो रखनि था। जी प्रोफेसर फैसल कदीर साहब, आप मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी तहक़ीक़ हो रही है, सोशल साइंसिस पे कि नेचुरल साइंसिस पे? नेचुरल साइंसेज जो हैं वो सोशल साइंसेज से बहुत आगे हैं। तहक़ीक़ का आगाज़ नेचुरल साइंसेज में कोई 50 साल पहले हो गया था। यानी इस वक्त अगर जो है वो हज़ारों जर्नल्स हैं और जो नेचुरल साइंस के जर्नल्स हैं तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हैं और उनके इश्यूज़ भी साल में 12 निकलते हैं। सोशल साइंसेज के एक तो जर्नल्स कम हैं, 3500 के करीब हैं और इनके इश्यूज़ भी 4-4 होते हैं। तो नेचुरल साइंस चूँकि जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है, ये जो आप फील्ड में ये पीएचडी जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे सालों से हो रही है। जब मैंने अपना सोशल साइंसेज में जब मैंने डिग्री ली कादिर यूनिवर्सिटी से, उस वक्त तक वहाँ पीएचडी का प्रोग्राम ही नहीं था। 2004 तक 5 तक पाकिस्तान में मैनेजमेंट के अंदर पीएचडी का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। जबकि हमारे जो दूसरे दोस्त थे जो किसी और फील्ड में थे, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, लिटरेचर में, उनके यहाँ पीएचडी के प्रोग्राम 30 साल पहले थे। यूनिवर्सिटी में 65 जब बनी तब से वहाँ पीएचडी प्रोग्राम जारी हैं। तो नेचुरल साइंस बहुत आगे है, नंबर ऑफ़ जर्नल्स, नंबर ऑफ़ रिसर्चर्स, साइटेशंस। इस वक्त जो तहक़ीक़ के मैदान में जो साइटेशंस हैं 93% नेचुरल साइंसेज की हैं और सिर्फ 7% सोशल साइंसेज की हैं। तो ये तकरीबन रेशो है, 12-13 गुना ज़्यादा है वो हमारी सोशल साइंसेज के मुकाबले में। नेचुरल साइंसेज में चूँकि थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ऑब्जेक्ट उसमें जो है बड़ा वाज़ेह होता है और उसमें आपकी ह्यूमन की ओपिनियन की वैल्यू नहीं होती। मसलन एक आदमी अगर जो है वो बात कर रहा है पत्थर के ऊपर, तो उसे पता है मैं पत्थर के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें राय कुछ नहीं है। नेचुरल साइंसेज को इंसान की राय से अलहदा करके ही देखते हैं। तो इसलिए किसी का ऑब्जेक्ट पत्थर है, किसी का सितारा है, किसी का पौधा है, किसी का जानवर है, तो नेचुरल साइंसेज वाले अपने ऑब्जेक्ट में वाज़ेह हैं, उनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। मज़मून की डेफिनेशन में फ़िज़िक्स क्या है और केमिस्ट्री क्या है। हमारे जो मज़मून है इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ओपिनियन बहुत ज़्यादा है, परसेप्शन का बहुत रोल है। तो सोशल साइंसेज की रिसर्च में रिसर्च क्या है और इसके बारे में ऑब्जेक्ट क्या है ये बात वाज़ेह नहीं होता। आप किसी से पूछें फ़िज़िक्स क्या है तो 20 लोग एक जवाब देंगे
آپ کسی سے پوچھیں مینجمنٹ کیا ہے تو آپ کے 20 جواب آ جائیں گے, اس کی ڈیفینیشن کیا 20 جواب آ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو انسان کی رائے کی ویلیو کی وجہ سے, اس لیے سوشل سائنسز میں آپ کو تھیوری بلڈ کرنی پڑتی ہے, لکھنا بہت پڑتا ہے, زبان کا بہت عمل دخل ہے. نیچرل سائنسز میں زبان کوڈیفائڈ ہو گئی ہے, ہر نے چاہے کیمسٹری ہے یا فزکس ہے, اکنامکس, انہوں نے اپنے کوڈس ڈیفائن کر لی ہیں. میتھمیٹکس کی زبان ہے, اس میں 3 نقطوں کا ایک مطلب ہے, 4 نقطوں کا ایک مطلب ہے, ایکول کا مطلب کچھ اور ہے. جبکہ سوشل سائنسز میں آپ ہمارا جو پیپر ہوتا ہے عام طور پہ 20, 30, 40, 50 صفحوں کا ہوتا ہے, ہمیں ہر دفعہ تھیوری بلڈ کرنی پڑتی ہے, جبکہ وہاں پہ تھیوری ویل اسٹرانگ ہے, ویل اڈاپٹڈ ہے, اور وہاں پہ بہت سیٹلڈ ہے. اس لیے نیچرل سائنس سے بھی فی الحال سوشل سائنس کا کوئی مقابلہ نہیں, بلکہ ہم کہہ رہے ہیں ڈیتھ آف سوشل سائنسز. سوشل سائنسز کی موت واقعہ ہو رہی ہے, انسان آہستہ آہستہ دور اس سے ہو رہا ہے, اور جب سوشل سائنس سے دور ہوگا تو انسان سے دور ہوگا. تو سوشل سائنس کا مطلب ہے انسان کو پاس لانا. اس لیے میں نے نیچرل سائنس چھوڑی. میں نے پہلے 14 سال نیچرل سائنس بہت بڑی ورڈ سے میں نے سوشل سائنس کو چھوڑنے سے موت ہو جاتی ہے. نہیں, میں نے کہا نیچرل سائنس چونکہ اس کا آبجیکٹ انسان نہیں ہے, بالکل اس کا آبجیکٹ بے جان چیزیں ہیں نا, وہ انسان کو ایک آبجیکٹ سمجھتا ہے. جبکہ ہم انسان کے خیالات, اس کے تصورات, اس کے موڈ, اس کے ایموشنز, اس کے بہت سی باتیں ہیں جس کے بارے میں انسان کو فوکس کرتے ہیں. انسان کو فوکس کریں گے تو سوشل سائنس ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں, انسان کو سائڈ پہ کریں, علم ایک اور چیز ہے, انسان ایک اور چیز ہے. یہ ہے فرق دونوں میں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نیچرل سائنس کے ساتھ ابھی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. جی ڈاکٹر عبدالرحمان, तव्हांखे ॿुधाइजो कि तहक़ीक़ जेका आहे अॼुकल्ह असां सम्झूं था तहक़ीक़ तमामु मुश्किल आहे, हिकिड़ो ख़ुश्क सब्जेक्ट आहे, आसान कीअं बणायो वञे? असुल ॻाल्हि आहे डॉक्टर साहिबु, आसान तॾहिं थींदो जॾहिं असांखे शौक़ु पैदा थींदो. हर शइ जेको आहे न शुरू में मुश्किल लॻंदी आहे, लेकिन जॾहिं तव्हांखे उन सां शौक़ु हुजे, दिलचस्पी हुजे, इश्क हुजे उन सां, पोइ उहा शइ आसान थी वेंदी आहे. असांजो नौजवान नस्ल जेको अॼु मौजूदु आहे उन में आसान पसंदी ॾाढी थी वई आहे. अने सहूलियात ॻोल्हनि था, सवलो कमु हुजे, शॉर्टकट्स हुजनि जंहिंमें असांखे महिनत न करणी पए ऐं मज़े ऐं सुकून सां सवलाई सां जेको कमु थी वञे. त उन लाइ तहक़ीक़ लाइ जेको आहे सो मुहक़िक़ थियणो पवंदो, ॻोल्हा करणी पवंदी, जाखोड़ करणी पवंदी, ऐं मुख़्तलिफ़ किताब, लाइब्रेरीज़, स्कॉलर्स, शख़्सियतूं, उन्हनि खे तलाश करे जुस्तजू कबी, तॾहिं ई थींदो. ऐं उन लाइ बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे त हक़ीक़ी जेको आहे सो मुहबत हुजे, हक़ीक़ी इश्क हुजे. माण्हू सचाई सां अगरि उहा महिनत कंदो न, उनजो पोइ नतीजो मिलंदो ऐं उन मां पोइ ई मज़ो ईंदो उन तहक़ीक़ मां. बाक़ी जे असांखे हक़ीक़ी उन सां तालुक़ु न हूंदो ऐं असां चाहींदासीं फॉर्मेलिटी पूरी थिए या असांखे डिग्री मिली वञे या असां किथां ॾिसी वाइसी जेको आहे ईअं कमु कयूं, उहो मुनासिबु न रहंदो. हक़ीक़ी मज़ो तॾहिं आहे जॾहिं तव्हां ख़ुदि जाखोड़ कयो, जुस्तजू कयो, लाइब्रेरीज़ में वञो ऐं आलिमनि सां, अदीबनि सां या जेको बि शोबो आहे, स्कॉलर सां, जीअं डॉक्टर साहिबु ज़िक्र कयो सोशल साइंस, नेचुरल साइंसिस आहिनि, उन शोबनि में वञो ऐं मैदान में लही मुक़ाबिलो कयो. बाक़ी घर वेही करे तव्हां जेको आहे इहो एॾो वॾो मैदान जेको आहे इहो कोन मारे सघंदो. इन लाइ महिनत, जदोजहद जी ज़रूरत आहे ऐं हक़ीक़ी इश्क हुजे त पोइ माण्हू कामयाबी माणे सघे थो. बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे. जी सर, मुझे प्रोफेसर फैसल साहब आप मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में रिसर्च हो रही है, जो तहकीक हो रही है, कि आपको लगता है कि वो काबिल कबूल है या फिर वो क्वालिटी वाली है, उससे कोई हमें फ़ायदा हो रहा है? जी देखिए, किसी भी चीज़ की जो कबूलियत है वो कौन तय करता है? तहकीक अगर काबिल कबूल है तो कौन तय करेगा? दुनिया के टॉप जर्नल्स. आज से 20 साल पहले जब मैंने तहकीक शुरू की, पाकिस्तानियों के बहुत कम थे आर्टिकल्स जो कि दुनिया के जर्नल्स में छपते थे. बल्कि मैं ढूंढता था किसी की साइटेशन हो, किसी का मुझे नाम नज़र आ जाए, किसी पाकिस्तानी का या मुसलमान का नाम नज़र आ जाए. अब अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने अब दुनिया के हर जर्नल में, दुनिया की जर्नल्स की कैटेगरीज़ हैं. एक तो HSCD की हुई है WXYZ, एक दुनिया में भी हैं A स्टार और A जर्नल्स. तो उन जर्नल्स में पाकिस्तानियों के पेपर्स मोर एंड मोर दे आर बीइंग पब्लिश्ड. आज से जब हम पुराने लोग थे, हमारे जो मैथमेटिशियंस थे, जो फिज़िक्स के लोग थे, उनका काम तो छपता ही था, मेडिकल में काम भी छपता था, और क्योंकि वहाँ पे तहकीक पहले हो रही थी. सोशल साइंसेज में अभी पिछले 10 सालों से 2004 के बाद पिछले 20 सालों में काम छपना शुरू हुआ है, और अब इस वक्त काफ़ी सारे आर्टिकल सोशल साइंस में आ रहे हैं हमारे. मतलब अब जो है ना, हमारे करीबी जो सारे दोस्त हैं उनके आर्टिकल दुनिया के टॉप, कोई जर्नल ऐसा नहीं है दुनिया का जहाँ पे हमारे लोगों की तहकीक छपी ना हुई. मगर उनमें से मसला ये है कि वो सारे लोग 90% पाकिस्तान में बैठे ही नहीं हुए. वो सारे लोग जो है ना वो कहीं और बैठे हुए हैं, उनकी कोलैबोरेशन कहीं और है, उनका स्पॉन्सर कोई और है, और उन मुल्कों में तहकीक करने के फ़ायदे बहुत हैं.
اس لیے وہاں جا کے وہ کام چھاپ لینا نسبتاً آسان ہے. پاکستان میں رہ کے اصل میں کام چھاپنا اب ممکن ہے. پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی تب ہے جب آپ جو ہے نا ڈبلیو کیٹیگری میں یا ایکس کیٹیگری میں کوئی آرٹیکل چھاپ لیتے ہیں, تو وہ ایک مجبوری بن جاتی ہے بچے کی چھاپنا. تو اس لیے اگر ہم جتنے پی ایچ ڈی پروڈیوس کریں گے تو ریسرچ آنا شروع ہو جائے گی. تو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی تحقیق جو ہے نا وہ آسان چیز ہے. پہلے تو بات ہے کہ اس خوف سے باہر ہیں. تحقیق کیا ہے؟ ہم ہر روز تحقیق کرتے نہیں ہیں, کون سا موبائل خریدنا ہے, کون سے کپڑے پہننے ہیں, کون سے, تو تحقیق کرتے رہتے ہیں. یہ عام سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صرف 1 سال میں اپنے فیلڈ میں کسی ایک کانسیپٹ کے اوپر جو دنیا کے اچھی جگہ پہ چیز چھپی صرف وہ پڑھنی ہے. میں کہتا ہوں خبردار اگر اور کوئی اور کچھ پڑھا تو آسان کام ہے. آپ وہ سوال ڈھونڈیں کہ جس سوال کے جواب میں نیا جواب چھپا ہے. ایک سوال تو ڈھونڈنا ہے, جسٹ فائنڈ ون کویسچن. اس سے پہلے ایک کانسیپٹ ڈھونڈیں جس کے اوپر آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے یا تحقیق کرنی ہے. تو آپ ایک کانسیپٹ ڈھونڈ لیں, ریسرچ شروع ہو گئی. تو یہ کام ہم نے اب ظاہر ہے 20 سالوں سے یہاں پہ کر کے 20-25 پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے ہیں, 70-80 ایم فل پروڈیوس کیے ہیں. اب انہیں دکھا دیا ہم نے جو کچھ کیا ہے. بہت ہم نے ٹائم ویسٹ کیا, مگر اب ہمارے پاس وہ طریقے آگے ہیں. آپ طے کریں کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے, 1 ماہ تک آپ کو پہنچا دیں گے وہاں پہ, لو جی آپ یہ تحقیق شروع کریں. تو وہ اب آسان ہو گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب کیپیسٹی اویلیبل ہے اور بہت سے مسائل ہیں. آپ آگے سوال کریں گے تو اس کا جواب بھی دوں گا. بالکل صحیح بات ہے سر. جی سر, तव्हां ॿुधाइजो मूंखे त असांजे शागिर्दनि में अॼुकल्ह सहूलियतूं काफ़ी ज़्यादा अची वियूं आहिनि न, त एतिरियूं वेबसाइट्स खुली वियूं आहिनि. उन जे बावजूद बि असां वटि तहक़ीक़ न पई थिए, खोट आहे उन जी शागिर्दनि में. अॼुकल्ह स्कूलनि में बि चयो थो वञे तव्हांखे बैचलर्स डिग्री में बि करणी आहे तहक़ीक़, तव्हांखे मास्टर्स में बि करणी आहे, तव्हांखे PhD में बि करणी आहे, लेकिन उन जे बावजूद असां वटि उहो आर्टिकल्स मुकाला घटि आहिनि. उन जो छा वजूहात आहिनि? सभ खां पहिरीं में डॉक्टर साहिबु इहा वजह आहे जो जेके नौजवान आहे न, मूं जीअं अॻु में अर्ज़ु कयो थो, सहूलियत पसंदि थी वियो आहे. नंबर 1. नंबर ॿियो इहो आहे त तहक़ीक़ लाइ या लिखण लाइ पंहिंजो मुतालो ज़रूरी आहे. जॾहिं तव्हां ख़ुदि मुतालो कंदव, पढ़ंदव, तॾहिं तव्हांखे शऊर ईंदो ऐं पोइ तव्हां लिखी सघंदव, ॻाल्हाए सघंदव, पढ़ी सघंदव. अफ़सोस सां इहो चवणो पियो त असांजो अॼोको जेको नौजवान आहे उहो जेको आहे मुतालो घटि थो करे जेको आहे. ऐं हू चाहे त मां रिसर्च बि कयां, तहक़ीक़ बि कयां, अॻिते बि वधां, MPhil बि कयां, PhD बि कयां, सभु कुझु कयां, लेकिन मसइलो इहो आहे त उहो ख़ुदि जेको आहे महिनत नथो करे, मुतालो नथो करे. जॾहिं मुतालो कबो, महिनत कबी, पोइ तव्हांखे शऊर ईंदो, ॼाण मिलंदी ऐं पोइ तव्हां लिखणु शुरू कंदव. पोइ उहो तव्हांजा आर्टिकल, मज़मून मक़ामी तौर ते कॉलेज जे रिसर्च जर्नल में, का न्यूज़पेपर में, का मैगज़ीन में, उनखां बाद में वञी यूनिवर्सिटी वारे उन ते पहुचंदा मयार ते. ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त यूनिवर्सिटी जेके जर्नल्स आहिनि, रिसर्च जर्नल, उन्हनि लाइ ईअं आम मज़मून त शायदि थींदो ई कोन्हे. उते वॾा वॾा स्कॉलर PhDs वेठा आहिनि, उन्हनि जा बोर्ड पैनल वेठा आहिनि ऐं उहे स्कॉलर जॾहिं वेंदा आहिनि यूनिवर्सिटी, असां पाण रहिया आहियूं. जीअं तव्हां उहो ज़िक्र कयो त मां उर्दू यूनिवर्सिटी में 2 सालनि ताईं पढ़ायो आहे वॉलंटरी बेसिस ते, MPhil लीडिंग टू PhD प्रोग्राम खे. माशाअल्लाह. त उतां जेको आहे उतां निकिरे पियो, उर्दू यूनिवर्सिटी मां रिसर्च जर्नल निकिरे पियो, कराची यूनिवर्सिटी मां शाह लतीफ़ शहर मां निकिरे पियो. इहे आर्टिकल्स पैनल ॾे वेंदा आहिनि ऐं कई आया आहिनि असां वटि जेको आहे मूं मुतालो कयो आहे, मुशाहिदो कयो आहे, त ॾिसी अफ़सोस थींदो आहे. त हू पंहिंजी फॉर्मेलिटी पूरी करण लाइ रिसर्च आर्टिकल PhD लाइ रिक्वायरमेंट आहे त रिसर्च जर्नल में आर्टिकल हुअणु खपनि, लेकिन अहिड़े तरीक़े सां यादि हो किथां नकल कयल या कापी कयल हूंदो आहे, या वरी उन में एॾो ग़लतियूं हूंदियूं आहिनि जो मयार जे क़ाबिल ई न हूंदो आहे जो उनखे रिकमेंड कजे तव्हां इनखे शाया कयो. बुनियादी ॻाल्हि आहे असांजे नौजवान खे अॼुकल्ह जेको आहे सहूलियतूं में तव्हांजी ॻाल्हि वांगुरु वधीक अची वियूं आहिनि. मोबाइल अची वियो आहे, इंटरनेट अची वियो आहे, जिन सहूलियतुनि जो असां तसवर कोन कयो जेको आहे, इहा तव्हांजी ख़ुशनसीबी आहे. त उन दौर में, एॾे जदीद दौर में फौरी तौर ते हर शइ अची थी वञे तव्हांजे साम्हूं जेको आहे, उनजे बावजूदु जेतिरो मुतालो न कबो, महिनत न कबी, तेतिरो तव्हां लिखी बि कोन सघंदव, पढ़ी बि कोन सघंदव ऐं तव्हांखे PhD या MPhil जी डिग्री बि कान मिली सघंदी जेको आहे. बिल्कुलु बुनियादी ॻाल्हि आहे मुतालो ऐं इल्म जी त अहमियत जेको आहे सो मुसलम आहे. तव्हां हदीस पाक बयानु कई ऐं तव्हांजी इजाज़त ॾियो त इल्म जी अहमियत जेको आहे मां अर्ज़ु कंदो हलां. बिल्कुलु सही. त इल्म जी अहमियत हिन दुनिया ते न, यानी हिन रूए ज़मीन ते न, इल्म जी अहमियत जो आगाज़ जेको थियो आहे सो काइनात खां थियो आहे. जॾहिं काइनात जी तख़लीक़ थी, ख़ालिक़ काइनात जेको आहे सभ खां पहिरियों जेको आहे मुकालमो थियो, जेका गुफ़्तगू थी आदम अलैहिस्सलाम ऐं मलाइकनि जे दरमियान, उतां जेका अहमियत ऐं फ़ज़ीलत मिली. ऐं जीअं आम लफ़्ज़नि में चऊं जेको इख़्तिलाफ़ थियो, मलाइका जॾहिं इनकार कयो त असां आदम खे सिजदो कीअं कयूं, जेको आहे आदम खे तव्हां असांजे साम्हूं मिटी मां पैदा कयो आहे ऐं असां जेको आहे सो नूरी मख़लूक़ आहियूं, जेको आहे असां कीअं आदम खे ई मिटी मां असांजे साम्हूं ई गारे मां पैदा थियो आहे.
तॾहिं जेको आहे अलाह तबारक व ताला चयो त जेको मां ॼाणा थो उहो तव्हां कोन था ॼाणो जेको आहे, या ॼाण जो आगाज़ यानी ख़ुदा काइनात खां शुरू थियो। ऐं उन वक़्तु अलाह तबारक व ताला सभिनी जे साम्हूं मलाइकनि उन्हनि जे साम्हूं पंहिंजा नाला बयानु फ़रमाया, कुझु अस्मा हुया, उन्हनि खे बयानु फ़रमाए ख़तमु करे चयूं त हाणे मूंखे ॿुधायो। मलाइकनि खे चयूं तव्हां असांखे मूं तव्हांखे छा ॿुधायो आहे? मलाइकनि चयो त असांखे त ख़बर न आहे छा ॿुधायो आहे, यादि न आहे। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम खे जेको सबक़ु ॾिनो वियो त उहो उन्हनि यादि ॿुधायो। उन ते फ़ौरन अलाह ताला हुकुम कयो, अहमियत फ़ज़ीलत मिली। काइनात जे पहले सबक़ु जेको हुयो पहिरियों उहो हुयो इल्म जी अहमियत, ऐं उन इल्म जी अहमियत ते आदम अलैहिस्सलाम खे तमामु मलाइका खे हुकुम थियो त हाणे आदम खे सजदो कयो। हीअ त आगाज़ ई जेको आहे काइनात जो अलाह ताला ख़ालिक़ काइनात इल्म जी अहमियत सां कयो आहे। उनखां पोइ तव्हां अची वञो रूए ज़मीन ते अची वञो त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जेका हीअ असांजो आख़िरी इल्हामी किताब क़ुरान करीम जो जेको नुज़ूल थियो उनजो आगाज़ बि जेको आहे सो निमाज़ रोज़े हज ज़कात सां कोन थियो। अलाह ताला हुकुम ॾिनो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ पंहिंजे रब जे नाले सां जा तोखे पैदा कयो। हीउ जेको सिलसिलो आहे हीउ यानी चयो वञे दुनिया में अगरि सभ खां वधीक अहमियत वारो जेको कमु आहे, जेको फ़हम आहे, जेको शऊर आहे, जेका ॾात आहे, सा इल्म ई आहे जेको आहे। ऐं इन जे ज़रिए ई असां जेको आहे पंहिंजे मान खे, मर्तबे खे, मक़ाम खे मथां करे सघूं था। बिल्कुल सही ॻाल्हि आहे, बेहतरीन, तमाम बेहतरीन। डॉक्टर फैसल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि हमारे नौजवानों को आप बताएं कि तहकीक की, रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है आज के दौर में। जी बिल्कुल, मैं पहले जो है ना, जो आदम का किस्से की बात हो रही थी उस पर कमेंट करना चाहता हूँ। ये मैंने किस्सा एक दफ़ा किसी क्लास में सुनाया, तो बच्चे कहते जी कि अल्लाह मियाँ ने सवाल बता दिए थे आदम अलैहिस्सलाम को, तो पर्चा तो आउट हो गया था। तो जब पर्चा आउट हो गया था तो आदम ने तो जीतना ही था, तो इसमें आदम का क्या कमाल है। मैंने कहा अच्छा वो आदल हैं, अल्लाह मियाँ आदल हैं, तो क्या उन्होंने ऐसा किया होगा? तो मैंने उसे बताया कि अल्लाह ताला ने फैक्ट तो सेम शेयर किए थे, मगर सवाल फैक्ट बेस्ड थे, फैक्ट नहीं थे। ओके। जैसे बताया जाए ये क्या है, ये संतरा है, तो ये अब ये सवाल था, आदम को बताया ये संतरा है, तो इस पे गौर करो ये क्या चीज़ है। सवाल ये नहीं पूछा ये क्या है, सवाल पूछा इसका क्या कर सकते हैं। तो फरिश्तों ने कहा हम तो बस वही जानते हैं जो हमें आपने बताया है, ये संतरा है, बस इसे कुछ नहीं पता। इंसान ने कहा ये संतरा है, इसके ऊपर छिलका उतार सकते हैं, छिलका उतार के इसकी फाड़ी खा सकते हैं, फाड़ी का जूस निकाल सकते हैं, बीज लैदा कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड निकाल सकते हैं, अगर शरारत करनी हो तो छिलका किसी आंखों में डाल सकते हैं, अगर उसका लेप बना के जिल्द पे लगा लें, ये सारी चीज़ें इंसान ने निकालनी है। तो मालूमात सेम थी, मगर जो क्वेश्चन था मालूमात के बेस पे था। तो इसका मतलब है कि उसमें से जो ये इस्तखराज है, जो इल्म का जो पैदा करना है, ये है असल इल्म। चीज़ों के नाम याद रखना इल्म नहीं है। मैं इस कमरे में पड़ी तमाम चीज़ों के नाम याद कर लूँ, ये इल्म नहीं है। हमने इल्म को महदूद कर दिया। इल्म क्या जानना, क्या जानना जी, ये कैमरा है, ये लाइटें हैं, ये फूल हैं, ये कंपेयर हैं, ये माइक है, ये इल्म नहीं है। हम अपनी चीज़ों के खुद ही नाम रख के उन्हें याद करते रहते हैं और समझते हैं कि मैं आलम बन गया हूँ। नहीं, उसकी माहियत जाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे शाय का इल्म दे, मैं उसकी माहियत जान सकूँ। ये कैमरे के पीछे क्या प्रिंसिपल है जिस वजह से ये काम कर रहा है, ये फ़ोटो कैसे बन रही है, ये वहाँ पे ट्रांसमिट कैसे और इसका प्रोसेस क्या है, ये इल्म है। इसका नाम कैमरा, वो टीवी है, ये इल्म नहीं है। ठीक है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा, अब दोबारा पूछ लें। मैंने पूछा कि सर आजकल तहकीक की क्या अहमियत है। जी, तहकीक जो है मुझे अब करते हुए कराते हुए 20 से 1 साल हो गए। मेरे पास बच्चे वो वाले आते हैं जो कि तहकीक में दिलचस्पी रखते हैं। मैं उनके बारे में कभी शिकायत नहीं करता, उन्हें मुताला का शौक़ नहीं। बच्चों को मुताला का शौक़ है, असातिज़ा को क्या मुताला का शौक़ है? अगर मुझे शौक़ नहीं है तो मेरे बच्चे को शौक़ कहाँ से पैदा हो जाएगा? जब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा 20 घंटे में से 19 घंटे तलीम की बात ही नहीं करते, हमारे स्टाफ रूम में बात होती है, यार बिजली का बिल क्या आया है, सोलर तुमने लगवा लिया, मकान कहाँ बना रहे हो। मैंने कभी तरस गया हूँ, कभी इल्म की बातें हुई, इल्म की बातें वो करते ही नहीं। तो क्या इंसान को हमने फ़िक्र मुआश में उलझा दिया है कि वो इल्म की बात नहीं कर पा रहा। अच्छा, वो बेंच मार्क उस्ताद के लिए तो हम रोल मॉडल है ना, तो अगर मैं खुद ही मुझे कभी कोई पढ़ता नहीं देखेगा तो वो क्यों पढ़ेगा। अब जो बच्चे पढ़ गए हैं, ठीक है, एक बच्चा छोटे से शहर से आया, तौनसे से, और वो छोटे से शहर से आया और मेरे पास आके बैठ गया, कहता जी मैंने पढ़ना है। तो मैंने कहा तुम इतनी दूर से आए हो, लाहौर में मेरे पास ही क्यों आए हो? कहते जी मैंने SME पे काम करना है और आप SME में आपका काम था तो आपसे सीखनी रिसर्च। मैंने उसे रिसर्च सिखाना शुरू की। इस वक्त वो मोनाश यूनिवर्सिटी में मुझसे 3 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा है।
ठीक है। 10 सालों में वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं 20 सालों में नहीं पहुँचा, क्योंकि मैं यहीं पर रहा। तो उसने ये सीखा कि तहकीक कैसे करते हैं, तहकीक कैसे पढ़ते हैं, वो आगे चला गया। इस तरह से मेरे बहुत से बच्चे हैं टेक्सास में और दुनिया भर में फैल गए हैं। वहाँ जो स्किल बिक रही है वो यही है। उनको असिस्टेंट चाहिए, उन्हें एसोसिएट चाहिए, उन्हें पब्लिशिंग के लिए लोग चाहिए, उन्हें कॉपी एडिटर चाहिए, उन्हें लिटरेचर को रिव्यू करने लोग चाहिए, उन्हें जो है ना साइटेशन वाले लोग चाहिए, उन्हें तमाम लोग चाहिए, उनके पास बहुत से लोग चाहिए, उन्हें टीचिंग चाहिए। तो हमारे बच्चे जो बाहर गए हैं सारे के सारे, मैं कहता हूँ, मैं कई बच्चों के नाम ले सकता हूँ जो कि तहकीक के बाद उनका कैरियर बहुत आगे चला गया। तो आपको अगर इल्म की कदर यहाँ पे नहीं है, जिस चीज़ की तलब ना हो, उस चीज़ की ज़ाहिर है रसद भी पैदा नहीं होती। तो बच्चे क्यों इल्म हासिल करें? वो देखते हैं कि इल्म हासिल करने का फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे तो तलब है ही नहीं। क्या आपके तमाम ओहदों पे आलम बैठे हुए हैं? क्या आपकी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त आलमों की है? क्या साथीज़ा सबसे ज़्यादा इज़्ज़त पा रहे हैं? मुआशरे में तो उनकी इज़्ज़त है ही नहीं। तो वो क्यों उनके रोल मॉडल गलत कर दिए? तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ठीक है, किसी एक खित्ते में किसी एक जगह के ऊपर आलमों की कदर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इल्म की कदर नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकता है? अल्लाह ने फरमाया कि मर्द और औरत दोनों पे फ़र्ज़ है। ये फरमाया गोद से गोद तक जैसे बात हुई, ये काम करे। तो इल्म हासिल करने जिन्होंने तहकीक खाली डिग्रियाँ ली हैं, वो बच्चे बाहर जाके भी कामयाब नहीं हुए, और बाहर जाके और जॉब्स कर रहे हैं और पिज़्ज़े बेच रहे हैं और बाकी काम कर रहे हैं। मगर जो तहकीक जानते थे, उनकी छोटी सी स्किल भी उन्हें वहाँ बड़े आराम से वो सर्वाइव कर गए, यूनिवर्सिटी में चले गए और वहाँ जाके उनको एजुकेशन सेक्टर में उनको जॉब्स मिल गई। तो इसका मतलब है कि इल्म की कदर कहीं और है। तो जहाँ हमें कहते हैं ना सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। तो आलम जो रिसर्च कर रहा है, जब फार्मूला ये है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को जो फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले पे अमल करने वाले नाकाम कैसे हो सकते हैं? वो फार्मूला क्या है? फैक्ट में से ट्रूथ निकालना। ट्रूथ सीकिंग मिशन आपको आता है तो कैन यू फेल? ये तो फितरत का असूल है, आप फेल हो सकते नहीं। तो कामयाबी की गारंटी है, अगर आप तहकीक सीख लें तो कामयाबी की गारंटी है। और हम तहकीक करते ही नहीं हैं, इसलिए हम नाकाम है। सही बात है, सही बात है जी। डॉक्टर अब्दुर रहमान, तव्हां ॿुधाइजो त असां वटि जेका हिन महिल ताईं तहकीक थिए पई, छा उहा मयारी आहे? जी डॉक्टर साहब, जेको आहे हिन वक़्त ताईं तहक़ीक़ थी आहे अॼु ॾींहं ताईं, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह यानी बहितर आहे, यानी 100% उनखे कोन था चई सघूं असां, लेकिन तहक़ीक़ जो मयार बहितर रहियो आहे। लेकिन हाणे अॼु को मौजूदा दौर में जेका थिए पई, इन में बहितरी जी गुंजाइश घणी आहे, जो सहूलतूं वधीक मुयसर थिए अॼोके नौजवान खे। पुठिएं दौर जे मुक़ाबले में अॼु ॾिसो पाण वटि कंप्यूटर आहे, इंटरनेट आहे, ऐं सिंधी ज़बान जे हवाले सां बि सिंध जे आलिमनि ऐं ख़ुशूसी तौर ते IT जे माहिरनि वॾो कमु कयो आहे। इन हवाले सां सिंधी ज़बान में बि ख़ुशूसी तौर ते सुठो मवाद मिली सघे थो, ऐं किताबनि जा हवाला रेफरेंसिस मिलनि था, जिन सां सिंधी नौजवान बि ख़ुशूसी तौर ते ॿियनि शोबनि सां गॾु पंहिंजी ज़बान में कल्चर, तहज़ीब, तमदन, तारीख़, इन्हनि मौज़ूअनि ते सुहिणे नमूने कमु करे सघे थो। ऐं बहितरी जी उमेदु आहे ऐं अञा बि रखिजी सघे थी। लेकिन शर्त इहो ई आहे त तहक़ीक़ जी यानी शौक़ बि हुजे, तलब बि हुजे, ऐं उन बुनियाद ते अगरि कजे त उन मां जेको आहे बहितर नतीजा निकिरी सघनि था। ऐं असां पुरमीद आहियूं अॼु मौजूदा नसुल खां ऐं नौजवाननि खां सुठा नतीजा निकिरंदा ऐं सुठो रिज़ल्ट ईंदो। लेकिन शर्त इहो आहे महिनत हुअणु खपे। बिल्कुलु बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। नाज़रीन, तहक़ीक़ त थिए पई असां वटि, लेकिन तहक़ीक़ जेका आहे उहा अगरि शाया नथी थिए, नशर नथी थिए, त उनजो कोई फ़ाइदो न आहे। ईअं ई प्रोफेसर फैसल क़दीर जिन जा तक़रीबन माशाअल्लाह सां 73 जेके आहिनि उहे पब्लिकेशन्स थी चुकियूं आहिनि। उन्हनि मां 66 जेके आहिनि उहे आर्टिकल जनरल्स आहिनि, ऐं 2 जेके आहिनि उहे डिज़र्टेशन्स आहिनि, 3 जेके आहिनि उहे बुक्स आहिनि, ऐं 2 जेके आहिनि उहे प्रोजेक्ट आर्टिकल्स बि आहिनि। माशाअल्लाह से तमाम बेहतरीन काम करो है। तो प्रोफेसर फैसल कदीर से ही मैं बात करूंगी कि सर मुझे बताइएगा, हम लोग रिसर्च तो कर लेते हैं, तहकीक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो पब्लिश नहीं हो पाती, तो इससे क्या नुकसानात होंगे फिर? जी देखें, बच्चों के बारे में ये कह देना कि बच्चों को मुतालिया का शौक़ नहीं है, बच्चों को उनका बचपन छीना किसने है? हमने बचपन से स्कूल भेजा, स्कूल से वापस आ गए तो कारी साहब आ गए, कारी साहब से गए तो वैगन आ गई, फिर रक्षा आ गया, फिर होमवर्क आ गया, फिर क्लास वर्क आ गया, फिर रिपोर्ट आ गई, फिर मीटिंग आ गई। उसका सारा बचपन हमने खपा के जब बच्चा 8वीं क्लास तक पहुंचता है, वो स्कूल से और टीचर से, किताबों से, हम कहते हैं बुक, वो कहता है ये बहू है, बहू समझते हैं, बहू कहते हैं बला को। तो बच्चे को किताब से डर गया। अब बच्चा डर गया, डरने के बाद हमने उसको कहा बस याद करो, नंबर लो, ग्रेड लो, नंबर लो, ग्रेड लो। तो बच्चे को हमने बागी कर दिया तलीम के साथ, इल्म के साथ। अब हम कहते हैं वो पढ़ता क्यों नहीं है, हमने खुद ही उसे बागी किया है। मेमोरी बेस्ड सिस्टम ने तबाह कर दिया। क्रिएटिविटी का सिस्टम जो है ना वो होना चाहिए।
बिल्कुल तो सही अब बात आपने जो पेपर के शाया करने के बारे में बात की है, पब्लिश करने के बारे में बात की है, ये मैंने सारी पब्लिकेशन जो सारी की हैं 2017 के बाद की हैं, तो ये तो हर 7 साल लगे हैं, ठीक है ना। तो ये जो मेरे 70 से ऊपर आर्टिकल्स हैं और सारा जो रिसर्च का काम मैंने अभी किया है 7-8 सालों में, तो सारा पब्लिश भी हुआ है, ठीक है। बच्चे जो हैं उनको सिखाएंगे तो आपको रोल मॉडल बन के दिखाना पड़ेगा। मेरे एक बच्चा है, उसने इस साल 2 एक कैटेगरी में पेपर छापे हैं, लोगों के 50 साल में भी नहीं छपते, एक ही बच्चे ने 2 छाप दिए हैं। तो वो जो आप अपने लगाए हुए पौधों से खुद ही साया पाते हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। आई हैव जस्ट प्रोड्यूस स्टूडेंट्स, मैंने उनमें सेंस पैदा कर दी है और मैंने उन्हें सपोर्ट किया है। अब मैं कुछ भी नहीं करता, मेरे इस साल 9 आर्टिकल छपे हैं, मुझे वो पेपर तैयार करके लिख के देते हैं, मैं रिव्यू करता हूँ, जर्नल का सिलेक्शन करता हूँ, मैं उसमें खामियां निकालता हूँ, इसको नोक पलक संवारता हूँ, वो सबमिट करते हैं, रिवीजन आती है, 10 पॉइंट आते हैं, 2 पॉइंट जो मुश्किल होते हैं मैं हैंडल कर लेता हूँ। तो ये हम जो है ना वो पौधे लगाए हुए हैं, पौधे जो है ना वो सायेदार बन गए हैं, उसके फल लगे हुए हैं, पकड़ के खा रहे हैं। तो ये है कि आपकी अपनी लगाई हुई मेहनत अगर बच्चों पे मेहनत करेंगे तो वो है कि ये मिट्टी कहते हैं ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़खीर है साकी। तो स्टूडेंट जो है ना ऐसे ऐसे ब्रिलियंट बच्चे हैं, ऐसे ऐसे जेम्स हैं स्टूडेंट्स, मगर उनको फिर ढूंढना पड़ता है, वो फिर आपको ढूंढ लेते हैं। तो आप अगर तहकीक करेंगे, आप वाकई आपके पास लव विद द विजडम है। फिलोसफर क्या होता है? लव विद द विजडम। अगर आपको लव विद द विजडम है तो बच्चा आपको ढूंढ लेगा। मेरे पास सिर्फ 5 बच्चों की गुंजाइश होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे पास 20 बच्चे मुझे ना ढूंढ रहे हों, ठीक है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक काम चल रहा है, मगर उससे पिछले मैंने 15 साल इन्वेस्ट किए हैं, तब जाके ये वक्त आया। तो इसका मतलब है कि आप ये काम कर लें, इससे बेटर काम ही कोई नहीं है। कैरियर भी बन गया, पब्लिकेशन। अब मैं कुछ भी ना करूँ, अगले 5 साल तक मेरी रिसर्च छपती रहेगी, क्योंकि वो इंजन इतनी तेज़ी से चल पड़ा है, उसमें मोमेंटम बन गया है। इंजन बंद भी कर दें तो रुकते 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 5 साल लग जाएंगे, सही है। अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ये मैं फिर रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। मैं पहली दफ़ा ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दी है। मैं लैब में बैठता हूँ और बच्चों को टाइम देता हूँ, बच्चों को साथ बिठा के 3-3 6-6 घंटे हर हफ्ते 9 बच्चे आते हैं मेरे पास, बारी बारी वो मेरे पास बैठते हैं, उन्हें मैं एक ही काम करके सिखाता हूँ। उसके बाद दोबारा कहता अब तुम खुद करो। ये काम करें तो बहुत अच्छा है, टीचरों के लिए बहुत अच्छा काम है ये वाला। तहकीक में आएँ, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपके बच्चे बढ़ेंगे। अब मेरे सैकड़ों बच्चे हैं, वो अमेरिका से लेके और मलेशिया तक फैले हुए हैं। तो मुझे जब नया साल आता है, ईद आती है, कोई चीज़ होती है तो पैगाम आते हैं, हर रोज़ 4 मेले मैसेज आती हैं। ये बहुत ही मज़ेदार काम है। अपने बच्चों से तरक्की देख के हम कितने खुश होते हैं। बच्चा चल पड़ा, खड़ा हो गया, तो मेरे बच्चे तरक्की करते हैं, वो कहते हैं मुझे वहाँ जॉब मिल गई है, मैं पेरिस में मेरी जॉब मिल गई है, मुझे वहाँ मिल गई है। तो ये कल बच्चे ने कुछ पता ही नहीं था। तो ये मैं तो कहता हूँ कि साजा के लिए इस तरफ आएँ, ये बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल सर, मैं खुद रिसर्च की स्टूडेंट हूँ, तहकीक की स्टूडेंट हूँ, तो मैं बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैं भी जानना चाहूँगी कि मेरा आर्टिकल जो है वो टॉप रिसर्च जर्नल में कैसे शाया होगा। देखें, पहले तो आर्टिकल हो, वो पहली बात है कि आपको ये जानना चाहिए कि मेरा जो जर्नल है ये कहाँ छपना चाहिए। बिल्कुल। आपके अपने रेफरेंसेस में अगर 100 जर्नल्स हैं और आपको ये पता ही नहीं इस जर्नल का फोरम कौन सा है। जर्नल है क्या? जर्नल एक पीरियोडिकल है जहाँ पे पीरियोडिकली चीज़ें छपती हैं। कैसे छपती हैं? उसका एक एडिटर होता है, उसके मैनेजिंग एडिटर होते हैं। जर्नल सबसे पहले ये एस्टैब्लिश करता है ये जिस टॉपिक पे लिखा गया है क्या ये मेरे जर्नल का है, फिर ये जिस तरह से लिखा गया है मेरे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक है, क्या इसकी लैंग्वेज मेरे मुताबिक है, क्या इसकी लेंथ, नंबर ऑफ वर्ड्स, उनका पूरा मैनस्क्रिप्ट की प्रिपरेशन की पूरी गाइडलाइन है। अगर मैं वो गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा तो मेरा पेपर, वो इसे कहते हैं डेस्क रिजेक्शन, वो आगे प्रोसेस ही नहीं करेंगे। मैं गलत जर्नल को गलत फॉर्मेट के ऊपर गलत स्टाइल में गलत चीज़ भेज दूंगा तो दे विल रिजेक्ट इट। तो अगर आप जर्नल्स पढ़ रहे हैं, आपकी शुरू होती है पढ़ाई पढ़ने से, तो जर्नल की सिलेक्शन पहला स्टेप है। जर्नल की सिलेक्शन, उसकी फॉर्मेट की प्रिपरेशन। अब जर्नल को आप ये यकीन दिलाएंगे कि ये जो मेरा काम है ये आपके रीडर्स के लिए काम का है। कैसे? आपने इसके ऊपर पहले फलां चीज़ें छापी हुई हैं, आपने उसमें साइट ही नहीं की हुई। वो कहेगा यार इसने जो मेरा तो जर्नल का नाम इसके है, ये मेरा रीडर है ही नहीं, ही जस्ट ट्राइंग टू पब्लिश ए पेपर, दैट्स इट। तो आप उसे कहें मुझे लस्ट फॉर पेपर नहीं है, ये मेरा एक आर्टिकल है, आप छाप दें। अब जर्नल को आता है नज़र, जर्नल ने कल को वो आर्टिकल जब तक ज़िंदा रहना उसने आर्टिकल बेचना है। $29, $30, $50 पाउंड में उसकी हर क्लिक के ऊपर बिकना है। आप उसे फ्री दे रहे हैं आर्टिकल। तो अगर आर्टिकल म्यारी होगा तो वो छापेगा। जर्नल का इंतखाब हो, रेलिवेंट हो, म्यारी हो, उनके तरीके के मुताबिक हो, और आप रिवीजन के प्रोसेस को हैंडल करें, तो उसके बाद वो पेपर जर्नल आपका डेफिनेटली छापेगा।
टॉप टियर में जाएंगे तो पहले पहले आपकी रिजेक्शनें मिलेंगी, आप वापस आएगा, फिर आप जनरल चेंज करेंगे। एक पूरी स्ट्रेटजी है। आप 3-4 जनरल पहले आइडेंटिफाई करते हैं, पहले आप किसी बड़े जनरल में डालते हैं, वो कहता है जी आपके पेपर में ये खामी है, वो खामी है, उससे रिपोर्ट ले लें। जैसे मेडिकल में होता है ना, आप एक्सरे करा लें, उसके बाद आप अपने सारे जो है ना इंडिकेटर मेंटेन करें और दोबारा रिपोर्ट निकलवाएं। तो आप एक दफ़ा रिव्यू लें, रिजेक्शन लें, उसकी रोशनी में पेपर को रिवाइज़ करें, करेक्ट करें, एडिट करें, करेक्ट करें और फिर दोबारा जाएं। तो ये एक लगातार प्रोसेस है, करते रहें तो आस्ता 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 तीसरे साल चौथे साल बच्चे कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान, तव्हां जे ख्याल में तव्हांखे छा थो लॻे त जेको शोबो आहे असांजे शागिर्दनि जो, छा उन जे मुताबिक़ ई उनवान रखणु खपे पंहिंजी तहक़ीक़ जो, या तव्हां तहक़ीक़ जो उनवान कहिड़ो बि रखी सघो था? न, ईअं न आहे डॉक्टर साहिबु। शागिर्द खे शोबो या उनवान उहो रखणु खपे जंहिंसां उनखे दिलचस्पी आहे, नंबर 1। नंबर ॿियो इहो आहे त उनखे शोबे दिलचस्पी हुअण सां गॾु जेको पंहिंजो रिसर्च यानी सुपरवाइज़र आहे या गाइड आहे, प्रोफेसर आहे, डॉक्टर आहे, उहो बि जेको आहे उन सां बि मुशावरत ज़रूरी आहे। पंहिंजे तौर ते हू फ़ैसिलो नथो करे सघे। जेको आहे पहिरियां त दिलचस्पी हुजे उन टॉपिक सां, उन शोबे सां, ऐं उन ते मुतालो हुजे, मवाद हुजे। ॾिसे त मां हिन ते अगरि रिसर्च वर्क शुरू कयां थो, मूंखे अॻिते मवाद बि मिलंदो या न मिलंदो, ऐं मुंहिंजो मुतालो केतिरो आहे। उनखां बाद में जेके सुठा उस्ताद आहिनि, स्कॉलर्स आहिनि, आलिम आहिनि, उन्हनि सां मुशावरत करे, मुलाक़ात करे, जीअं साईं जन फरमायो, उस्ताद ई असां ई त बुनियादी शइ आहियूं जेको आहे। ऐं हक़ीक़ी माना में जेके उस्ताद आहिनि उन्हनि वटि वञिणो पवंदो, उतां ई रहनुमाई मिलंदी, गाइडेंस मिलंदी, तव्हां कमु करे सघंदो। लेकिन असांजी बदकिस्मती आहे या चइजे त अलमियो आहे, उस्ताद जेको आहे सो बिजली जे बिल मां, उस्ताद जेको आहे गैस जे बिल मां, उस्ताद पंहिंजे मसइलनि मां अञा आजो ई कोन्ह थियो आहे। त अगरि उस्ताद खे हक़ीक़ी मक़ाम ऐं मयार मिले जेको पूरी दुनिया में आहे, ऐं एॾो वॾो बुलंद ऐं आला मक़ाम आहे पूरी दुनिया, उहो मक़ाम जॾहिं उस्ताद खे मिली वियो त पोइ जेको आहे असांजो शागिर्द जेको आहे उनखे किथे बि का ॾुखियाई कान थींदी। सो हक़ीक़त में त पंहिंजे शौक़ु ऐं जज़्बे खे ॾिसी, पंहिंजे मवाद खे ॾिसी, उस्ताद जे उस्तादनि क़ाबिल ऐं स्कॉलर्स, आलिमनि, डॉक्टर्स जे रहनुमाई में टॉपिक जो इंतिखाब कयो वञे, त उनखां बाद में अॻिते माण्हू मैदान में लहंदो, पोइ उते तव्हां कमु करे सघंदव, शौक़ सां कंदव, रहनुमाई बि मिलंदी, तव्हांखे मवाद बि मिलंदो, ऐं तहक़ीक़ लाइ रस्ता नवां गस खुली पवंदा तव्हांजा। बाक़ी जे ईअं तव्हां का शइ खे ॾिसी वाइसी तव्हांजो त कमु ॾिठो ईअं खणी वठां, कुझु हितां हासिलु कयां, किथां कंहिं रिसाले में वठां, का किताब मां खणी वठां, साईं जन जी रिसर्च मां हिसो वठां, त ईअं कमु कबो त उहो कमु मुनासिबु न रहंदो जेको आहे। सो पंहिंजी महिनत ऐं लगन जी ज़रूरत आहे, जेको माण्हू नेक, ऐं ॿियोनि में नेक नियती बि हुअणु खपे, मक़सद सां सचाई हुअणु खपे। इल्मु जेको आहे सो ही नूर आहे, ही रोशनी आहे, ऐं जेके ॿिया ग़लति रस्ता आहिनि उहा सभु ऊंदाही वारा रस्ता आहिनि। तव्हां का ॿिए जो कमु, का ॿिए जी तहक़ीक़, ॿिए जी रिसर्च अगरि तव्हां खणी ऐं जंहिंखे ईअं चऊं त चइजे चोरी कई जेको आहे, त इहो किथां मुनासिबु न रहंदो। हवालो तव्हां ॾेई सघो था, रेफरेंस तव्हां ॾेई सघो था, लाइब्रेरी में रिसर्च जो, किताब जो, सॼी दुनिया मां ॾेई सघो था, लेकिन मिन वन उनखे जेको आहे न हू बहू नक़ल नाहे करिणो, पंहिंजे अंदाज़ में पंहिंजे तरीक़े सां पेश करिणो आहे। उहो तव्हां अगरि कंदव, उहो तव्हांजो कमु जेको हूंदो उनखे मान मिलंदो, लाभ मिलंदो, ऐं उहो पोइ जॾहिं फॉर्मेलिटीज़ थींदियूं, तव्हांजा मक़ाला थींदा, कॉन्फ्रेंस थींदियूं, सेमिनार थींदा, ऐं जनरल में आर्टिकल तव्हांजा वेंदा, त उन्हनि खे मौक़ो मिलंदो। अदरवाइज़ उहे रिजेक्ट थी वेंदा, मौक़ो न मिलंदो, ऐं तव्हां पंहिंजे मक़सद में नाकाम थी वेंदो। बिल्कुलु। तव्हांजी ॻाल्हि खे हिकिड़ो समराइज़ कयूं त तव्हां चओ था पंहिंजी शोबे जे मुताबिक़ जेको आहे उहा तहक़ीक़ करणु खपे, शोबे जे मुताबिक़, ऐं महिनत त लाज़मी आहे ई आहे, लेकिन पंहिंजे शोबे जे मुतालिक़ हुजे। तव्हां ॿिए कंहिं शोबे में जंहिंसां तव्हांखे तालुक़ ई न आहे, तव्हां फ़र्ज़ु कयो तव्हां लिसानियात तव्हांजो शोबो आहे, ऐं तव्हां वञी जेको आहे सो ॿिए कंहिं शोबे ते जेको आहे तारीख़ ते हलिया वञो, उनमें तव्हांखे कामयाबी न मिलंदी। तव्हांजो जंहिं शोबे सां तव्हांखे लगन आहे, इश्क़ आहे, मालूमात आहे ऐं मवाद, ऐं इहो बि ॾिसो तव्हांखे मवाद बि मुयसरु हुअणु खपे। उहे सभु शयूं ॾिसो त किथां तव्हांखे मवाद मिलंदो, कीअं मिलंदो, त पोइ तव्हांखे कामयाबी मिलंदी, ॿी सूरत में नामुमकिन आहे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। जी डॉक्टर फैसल, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आपको पता है, तो इसके हवाले से मुझे बताइएगा कि रिसर्च का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई किरदार है, कोई रोल है, इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है टॉपिक्स के सर्च करने में या स्टूडेंट्स के हवाले से? देखें जो कोई भी टूल है ना, अगर वो कैलकुलेटर भी था कभी, तो वो भी एक शक्ल थी ना एआई की। कैलकुलेट करना क्या है, मैंने अगर गिनती आती होगी ना तभी वो मेरे किसी काम का है ना, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। कैलकुलेटर साइंटिफिक हो गया,
اگر مجھے پتہ ہی نہیں انڈر روٹ کیا ہے تو وہ کیا کرے گا. سو ایوری اکوپمنٹ از دی ایکسٹینشن آف مائی برین. اگر میرے دماغ میں کچھ ہے تبھی میرا لیپ ٹاپ میرے کام کا ہے. میرا لیپ ٹاپ میرے کام کا تب ہے اگر میرا دماغ آرگنائز ہے. میں اپنے لیپ ٹاپ میں خود ہی چیزیں سیو کر کے انہیں ڈھونڈتا پھروں بالکل تو میرے کسی کام کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کام ہے نا تحقیق میں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ کام ہے جو روٹین کام ہے, جو بورنگ کام ہے, میمورائزیشن کا کام ہے, کوئک ایکسیس کا کام ہے, ڈیٹا پروسیسنگ کا کام ہے, ڈیٹا انالیسس کا کام ہے. ہمارے دماغ کے نا دو حصے ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں ہم لیفٹ برین, ایک کو ہم کہتے ہیں رائٹ برین. جو لیفٹ برین ہے وہ لاجک کے اوپر, وہ انالیسس کے اوپر, فیکٹس کے اوپر, آبجیکٹیو ڈیٹا کے اوپر چلتا ہے. ایک رائٹ برین ہوتا ہے جو ہماری کریٹیوٹی, ہماری تخلیق, ہمارے ایموشنز, ہماری پینٹنگز, ہماری جمالیاتی ذوق, اس کا عکاس ہے. ٹھیک ہے, تو جو کام آپ کو بور کر دیتے ہیں بار بار وہ اے آئی سے لے لیں. بہت سی چیزیں ہیں, آپ اس سے پتہ کریں. تو وہ اے آئی صرف ایک چیز وہ ہے, اگر آپ جو نئی بات ہے, جو نئی چیز ہے, جو نیا نالج ہے, جو نیا سوال ہے, وہ اے آئی پیدا نہیں کر سکتا. آپ اسے کہیں جا کے ایک شعر لکھ دے غالب جیسا, آپ اسے کہیں جا کے کہ جناب ایک نظم لکھ دے اقبال جیسی, لکھ کے دکھائے اے آئی کیا ہے. گاربیج آپ جو ڈالتے ہیں وہی نکال سکتے ہیں. آئی کیو کیا چیز ہے؟ آئی کیو یہ چیز ہے کہ آپ اپنے دماغ میں پڑی ہوئی چیز کو کوئکلی ریکال کر کے پروسیس کر کے کسی کو بتا دیں. یہ کام اے آئی آپ سے زیادہ بیٹر کر سکتا ہے. اس کام میں وہ اچھا ہے. مجھے اب شاید 6-7 ٹیلی فون نمبر یاد ہوں, مجھے کبھی 600 ٹیلی فون نمبر یاد تھے. اب مجھے ضرورت نہیں ہے. میرا موبائل ہے, میرے ٹیلی فون نمبر یاد رکھے گا, میرے میسج یاد رکھے گا, میری ای میلیں ہیں. تو اے آئی نے ہمارے میموری کا وہ سیکشن جو کہ رائٹ پہ, جو کہ لیفٹ پہ لگ رہا تھا میمورائز, اس کی اہمیت کو کم کر دیا. اب میں چیزیں میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ بہت سے کام اب میں پڑھ یاد نہ کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی کا استعمال میں تب کر سکتا ہوں اگر میرا دماغ کام کرتا ہے, جو چیزیں بورنگ ہیں, روٹین ہیں, کریٹیو ہیں, ڈیٹا ہے. تو میں اگر جو ہے اپنے 900 لوگوں کا سارے ٹیلی فون نمبر مجھے یاد کر سکتا ہوں, جو کہ مجھے اب ضرورت نہیں رہی اے آئی کے بعد. میں بہت سارا لٹریچر, بہت ساری چیزیں, اسٹریٹجک مینجمنٹ کی 10 ڈیفینیشن کون سی ہیں ساری مجھے نکال کے دیتا ہے 1 منٹ میں. تو میں نے اگر جب چیز سمجھ لی نا, جیسے ویکیپیڈیا ٹائپ ہے, انسائکلوپیڈیا ہے, اگر مجھے کوئی چیز سیکھنی ہے تو اے آئی مجھے ہیلپ کر دے گا. میرے چیٹ جی پی پہ جاؤں گا, مجھے بہت سی باتیں کوئکلی بتا دے گا. مگر جو نیا سوال ہے وہ اے آئی پیدا نہیں کر سکتا. نیا سوال کیا ہے, نئی تحقیق ہے, نیا لفظ اے آئی ایجاد نہیں کر سکتا. اگر ہمارے بچے اے آئی کے ایڈکٹ ہو گئے تو اے آئی ایک تو زیادہ تر انگریزی لینگویج میں ہے. اس کا مطلب ہے جو وہ آپ کو پڑھانا چاہ رہے ہیں وہی آپ پڑھ پائیں گے. صحیح بات ہے. جیسے میڈیا آپ کے دماغ کو یوز کرتا ہے, تو ایک دفعہ آپ اس کے عادی ہو گئے تو آپ کی کریٹیوٹی, آپ اس مزے سے محروم ہو جائیں گے, آپ اس تخلیق کے اس مزے سے محروم ہو جائیں گے جو کسی شاعر کو نئے شعر لکھ کے, کسی موسیقار کو نئی دھن بنا کے مزہ ہوتا ہے, اس مزے سے. تو انسان کی جو جینون ہیپینس ہے وہ ختم ہو جائے گی. اے آئی کو ہم استعمال کریں گے ڈیفینیٹلی. لیکن سر اسی کے ساتھ, آئی ایم سو سوری فار دی انٹرپریشن, لیکن میں پوچھوں گی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ پہلے سے ریسرچ ہو چکی ہے یا ابھی ہم نئے سرے سے کر رہے ہیں, جبکہ ہم آرٹیکلس دیکھیں گے پہلے سے پڑھے ہوں گے. ہاں چلیں ٹھیک ہے, ہم نے 3 آرٹیکلس دیکھے, تینوں جو ہے وہ مختلف ہے. ہم نے وہ والا نہیں دیکھا جو پہلے سے ہو چکا ہے, ہم نے پوری ریسرچ کر لی. کیا ہماری ریسرچ پھر ویلڈ ہے؟ جی دیکھیں, پہلے جو آرٹیکل سرچ کرنے کا کوئی طریقہ ہے, بالکل اس کا ایک کوڈ یاد رکھیں, وارڈ جے پی. کی ورڈز اگر آپ کو پتہ ہیں, آپ کو آتھرز کے نام پتہ ہیں, آپ کو ریویو پیپر پتہ ہیں, آپ کو ڈیٹا بیسز پتہ ہیں, آپ کو جرنلز پتہ ہیں, آپ کو وہ اس کام کے اوپر پہلا پیپر کون سا آیا تھا آپ کو پتہ ہے, تو بات آگے بڑھے گی نا. اگر میں ریسورس بیسڈ ویو کے اوپر کام کرتا ہوں تو برنی کا پیپر ہر کوئی سائڈ کرے گا. اگر میں کسی خاص ویریبل پہ کام کرتا ہوں تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. اگر میں نے ایک بچے نے نالج ہائڈنگ پہ کام کیا ہے تو نالج ہائڈنگ کا ورڈ پہلی دفعہ کس نے استعمال کیا. تو کچھ ایسے لوگ ہیں, 4-5-6 پیپرز ہیں, اس کی ٹیکنیک ہے نا, آپ ان پیپرز کی جا کے سائٹیشن سے سرچ کریں. بالکل. ڈیٹا بیسز ہیں, ڈیٹا بیسز آپ کی ویب آف سائنس ہے, آپ کے جو ہے وہ ایمرلڈ ہے, آپ کا جو ہے وہ ایلز ویئر ہے, وہاں پہ کی ورڈ سرچ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سٹیزن شپ بیہیویئر کو کنٹیکسچل پرفارمنس بھی کہتے ہیں, ایکسٹرا رول پرفارمنس بھی کہتے ہیں. اس کے یہ 4-5-6 نام یہ ہیں. آپ نے کسی گاؤں میں جانا ہو تو اگر آپ کسی کے ایک ہی نام پتہ ہو, ڈھونڈ لیں کس بندے کو, آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کی برادری کیا ہے, اس کی ذات کیا ہے, اس کے الٹے نام کیا ہے, نک نیم کیا ہے, پیٹ نیم کیا ہے. یو نیڈ ٹو نو. ہمیں پتہ تو کسی ہے نہیں کون سے لوگ اس پہ کام کرتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا نہیں. بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپر ملتے نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ یار اتنے پیپر ملتے ہیں, کون سا پڑھیں کون سا. میں کہتا ہوں بھائی صرف 1 سال کے پیپر پڑھا, آپ ایک جا کے لفظ لکھیں,
تو اس کے اوپر سارے آرٹیکل ایک ڈیٹا بیس سے مل جائیں گے. تو سسٹمیٹک سرچ کریں, کوئی چیز مس ہوگی نہیں. اب کیسے پتہ چلا ریسرچ ہوگی نہیں ہوگی؟ لوگوں نے لکھا ہوگا. آپ نے 2024 میں اگر آپ نے ریسرچ کی ہے اور آپ کا جو فیلڈ ہے وہ نالج ہائڈنگ کے اوپر ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نالج ہائڈنگ کے اوپر ہم یہ تو جانتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں برانڈ ہیٹ کی. تو برانڈ ہیٹ ہمارا کانسیپٹ ہے جی, برانڈ ہیٹ کب پیدا ہوتا ہے پتہ ہے, برانڈ ہیٹ سے کس کو پیدا ہوتا ہے پتہ ہے, برانڈ ہیٹ کے بعد کنزیومر کرتا کیا ہے, اس کے اوپر ہمارا آرٹیکل اسی سال آیا ہے. اچھا, تو وہاں پہ لوگ لکھ رہے ہوں گے ہم برانڈ ہیٹ کو پہلے ڈیفائن کر دیا ہے, اس کے انٹیسٹنٹ جانتے ہیں, کانسیکوینسز نہیں جانتے, یہ جاننا باقی ہیں. تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے. اسے لٹریچر میں انگیج کریں گے تو وہاں پہ بہت سارے کویسچن آپ کے سامنے پڑے ہوتے ہیں, آپ کو منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں, میرا جواب دو. پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ آپ جب تک ڈیفیشنسی نہیں ڈھونڈیں گے نالج میں, تو ڈیفیشنسی ڈھونڈی نہیں ہے, کوئی کنفیوژن آپ کو آ گئی ہے, کوئی چیز انڈر ریسرچ ہے, سب باتیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. تو پڑھیں اور پڑھ کے دیکھیں, آپ کو 50 سوال ایسے ہیں ہمیں مل جاتے ہیں, یار اس پہ بھی سرچ ہو سکتی ہے, اس پہ بھی, اس پہ بھی, اس پہ. انسان تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے زیادہ, اس کا تو علم بالکل محدود ہے بیچارے کا. تو ہمیں کسی بات کا پتہ بھی نہیں ہے. جو بات پتہ ہے وہ 10 سال کے بعد چینج ہو جائے گی. آپ نے ایک بات پتہ کی, اس کے بعد چینج ہو گئی, کنسیپٹ نئے نہیں آ گئے. جیسے کہتے ہیں آپ سائبر کرائم, اس کا کنسیپٹ تھا ہی نہیں, تو سائبر کرائم کو کیسے ڈیفائن کریں گے, کیا ہوگا تو سائبر کرائم ہوگا, یہ کرائم کب ہوگا, اس کو قانون کیسے بنائیں گے, روکیں گے کیسے, یہ کرائم کون کرتا, بات آگے بڑھتی چلی جائے گی. تو نئے کنسیپٹ آ رہے ہیں, نئے فنامنے آ رہے ہیں, نئے چیزیں آ رہی ہیں, اس کے اوپر ہم کچھ جانتے نہیں ہیں. انسان تو بیچارہ بالکل ناواقف ہے, تبھی تو کہا غور تک کرو کہ ختم نہیں ہونا. اس لیے ہم کیا نہیں جانتے پتہ. پہلا سوال یہ ہے کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے. جو نہیں جانتے ہیں اسی میں سے نئی ریسرچ ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. جی ڈاکٹر عبدالرحمان, ماشاء اللہ सां तव्हां शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जी शाइरी में जेको आहे उहो इस्लामी क़दर जे उनवान सां पंहिंजी डॉक्टरेट में मुकालो जेको आहे उहो शाया कयो आहे. त मां तव्हां खां पुछंदसि त छा तहक़ीक़ जेका आहे उहा इंसानी किरदार खे बतलाए सघे थी? जी बिल्कुलु. तहक़ीक़ जेका आहे जॾहिं तव्हां, छो जो असांजी माशा अल्लाह सां सिंधी अदबी ॿोली आहे. जी बिल्कुलु. ऐं शाह साहब त असांजो सभिनी जो सरताज सरताज आहे, आहे. शाइरनि जो सरताज शुरा, न सिर्फ़ु बल्कि मां त ईअं चवंदुसि त वली कामिल आहे जेको आहे, सूफ़ियुनि जो बादशाह. ॾिसो, इंसान जे साम्हूं जॾहिं का बि शइ तव्हां रखंदव न, त उन लाइ हिकिड़ो पैमानो हुअणु खपे, परख लाइ पैमानो हुअणु खपे. ऐं उहो पैमानो जेको आहे सो शाह साहब जहिड़ी हस्ती हुजे, ऐं वरी उन जे सबूत लाइ, अथॉरिटी लाइ उहो हुजे त साईं जन जीअं फरमायो त मुंहिंजो सिर्फ़ु हिकिड़ो ई बैत हुयो जंहिंखे मूं पंहिंजो बुनियादु बनायो. जे तो बैत भाया से आयतूं आहिनि, नियो मन लाइन, पिरियां संदे पार ॾे. त साईं जन जो इहो पैगाम त जिन खे तूं मुंहिंजा अशार सम्झे थो, बैत सम्झे थो, कलाम सम्झे थो, इहे आयतूं आहिनि. हक़ीक़ी माना में इहे आहिनि आयतूं. जे तूं चाहीं थो तुंहिंजो मन, तुंहिंजो पिरीन महबूब हक़ीक़ी सां मिले, उन खे शुरू कर. इन हिकु शहर ते जेको आहे तक़रीबन मूंखे 8 साल लॻा, जेको आहे 8 साल मूं इन ते रिसर्च कई. ऐं किथे किथे जेको आहे सो कोशिशि न कई, कहिड़ियूं लाइब्रेरियूं, कहिड़ा स्कॉलर, कहिड़ा मकाला, कहिड़ा उस्ताद, कहिड़ा आलिम, कहिड़ा अदीब, लाइब्रेरीज़ जी जा खोड़ कई. ऐं एॾो आसान फ़हम त उन मां बि सिर्फ़ु हिकिड़ी पॉइंट या तलाश कई त साईं जन अख़लाक़ जे बारे में, इस्लाम जे बारे में किथां रेफरेंस वरितो आहे, किथे साईं जन पाण हूबहू क़ुर शरीफ़ जूं आयतूं बयानु कयूं आहिनि, उनखां बाद में किथे हदीस मुबारकूं बयानु कयूं आहिनि, किथे उन्हनि जो तर्जुमो बयानु कयो आहे. ऐं जॾहिं आगाज़ थिए थो त उहो बि जीअं क़ुर करीम जो या आगाज़ असां सूरत फ़ातिहा सां थिए थो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला जी हमद ऐं सना सां, बिल्कुलु इन साॻे ई उनवान ते शाह साहिब पंहिंजे कलाम आगाज़ अल्लाह ताला जे अस्माउल हुस्ना सां थो करे. अव्वल अल्लाह, अलीम, आला, आलम जो धणी, क़ादिर पंहिंजी कुदरत सी, क़ाइम आह क़दीम, वाली वाहिद वहदहू, राज़िक़ रब रहीम, सो साराह सचो धणी, चई हमद हकीम. इहे अरबी ज़बान जा उहे लफ़्ज़ आहिनि जेके असांजी ज़बान में बराए अल्लाह ताला जा नाला आहिनि, अस्माउल हुस्ना आहिनि. आगाज़ ई अल्लाह ताला जे नाले सां थिए थो. उनखां बाद में अख़लाक़ जेको आहे, किरदारु जेको आहे, इंसानियत जेका आहे, इहे शयूं जॾहिं शाह जे कलाम मां ऐं अल्लाह ताला जे, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फ़रमाननि जी रोशनी में पेश थियनि थियूं, त उनजो असरु थिए थो. इंसानु पंहिंजे किरदार खे, अख़लाक़ खे, सीरत खे अख़्तियार करे थो. ऐं ईअं इहो ई हुकुम आहे. तालीम जी माना इहा रहनुमाई आहे. ऐं वरी अहिड़नि नालनि सां हुजे, एॾा वॾा नाला हुजनि, एॾा मुअज़्ज़ज़ ऐं मोतबर नाला हुजनि, त बिल्कुलु असरु आहे ऐं थियणु खपे.
بالکل بالکل صحیح گالا جی جی ڈاکٹر فیصل قدیر تحقیق پہ تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, جی جی کتنے ہی سوالات ابھی بھی میرے ذہن میں ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک اویئرنیس دیں کہ ریسرچ کرنی چاہیے اور ریسرچ آسان بھی ہو سکتی ہے, آپ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں. میں چاہتی ہوں آپ ایک بریفلی ان کو سمجھائیں کہ ریسرچ اسٹارٹ آپ کیسے کریں, جی جی اور اس کے علاوہ پروجیکٹس میں, تھیئریز میں, ڈیزرٹیشنس میں کیا فرق ہوتا ہے, ایک سمپل سا ان کو میسج دینا چاہے. جی پہلے بات ہے ریسرچ اسٹارٹ کیسے کریں. دیکھیں انسٹیٹیوٹ آف سائنٹیفک انفارمیشن نے سائنسز کو جو ہے نا 2 حصوں میں بانٹا ہے, ایک نیچرل سائنس ہے, ایک سوشل سائنس ہے. اس وقت 276 کے قریب کل سبجیکٹ ہیں, 58 سبجیکٹ ہیں سوشل سائنسز کے, باقی نیچرل سائنسز کے. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس پہ طے کیجئے کہ مجھے نیچرل سائنس میں جانا ہے کہ سوشل سائنس میں. مجھے چیزوں میں دلچسپی ہے کہ انسانوں میں, مجھے پروسیس میں دلچسپی ہے کہ پیپل میں. میرا زیادہ فوکس کہاں پہ ہے. میں 10 گھنٹے اگر میں سوچوں تو میرے دماغ میں انسان آئیں گے کہ چیزیں آئیں گی. یہ بہت اہم سٹیپ ہے, اس کنفیوژن ختم کریں. تو آپ کو سوشل سائنٹسٹ بننا ہے کہ نیچرل سائنٹسٹ بننا ہے, طے کر لیں. سوشل سائنس بننا ہے تو پھر اپنا مضمون چنیں کون سا ہے, ٹھیک ہے نا, مضمون چنیں. مضمون چن لیا, ایک ہوتا کلر بلائنڈ, ایک ہوتا سبجیکٹ بلائنڈ. میں کہوں کہ جی آپ کا مضمون کیا ہے, جی مینجمنٹ ہے, اس میں اور بزنس میں کیا فرق ہے, میں نہیں بتا سکتا, تو آپ بلائنڈ ہیں. تو پہلے ایک مضمون چنیں, پھر اس کی بلائنڈنس ختم کریں. کیا اس مضمون کے قریبی مضامون کو آپ اس سے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ فلاسفر بن گئے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے مضمون کا آبجیکٹ سمجھ آ گیا ہے. اگر آپ کا مضمون فنانس ہے تو آپ کا آبجیکٹ منی ہے. اگر آپ کا مضمون مینجمنٹ ہے تو آپ کا آبجیکٹ آرگنائزیشن ہے. تو آپ نے پیسے کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے کہ ادارے کے بارے میں کرنی ہے. اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ بزنس فیلڈ ہے تو آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ ٹرانزیکشن ہے کہ مارکیٹ میں کیسے چیزیں خریدتے بیچتے ہیں, وہ بزنس کا بیسک یونٹ ہے. تو آپ کا مضمون کون سا ہے؟ اگر آپ نے سائیکالوجی میں کام کرنا ہے تو آپ کا آبجیکٹ دماغ ہے. اگر آپ نے سوشیالوجی میں کام کرنا ہے تو مدر ڈسپلن ہے. تو سب سے پہلا سٹیپ ہے سلیکٹ یور سبجیکٹ. دوسرا کیا ہے کہ سبجیکٹ کو بلائنڈنس ختم کریں. آپ کہتے ہیں میں نے پھل کھانا ہے, بھی کون سا پھل کھانا ہے, بھی پھل کھانا ہے, تو یہ آگے نہیں بڑھے گا. طے کریں پھل کھانا ہے, جی میں نے گول اور بڑا پھل کھانا ہے, وہ تو تربوز بھی ہوگا, وہ تو اور بھی ہوں گے, کون سا, بی اسپیسیفک. سو سلیکٹ یور سبجیکٹ, دین سلیکٹ یور فیلڈ. میرا جو فیلڈ ہے اس میں 35 جو ہے نا وہ فیلڈ ہیں. میں کہتا ہوں آپ نے ایچ آر میں کام کرنا ہے کہ او بی میں, او ٹی میں کام کرنا ہے کہ او ڈی میں, ٹی کیو میں کام کرنا ہے کہ اس میں. بھائی سلیکٹ یور فیلڈ. چلو اب کیا کرنا ہے جی, فیلڈ کی بلائنڈنس ختم کریں. کین یو ڈیفرینشیٹ دیم, نہیں مجھے سارے فیلڈ جیسے لگتے ہیں, تو آپ آگے بات نہیں بڑھیں گے. سلیکٹ یور سبجیکٹ, سلیکٹ یور فیلڈ. اچھا اس کی ریورس انجینئرنگ بھی ہے. آپ ایک کانسیپٹ چنیں, ٹھیک ہے. میرا ایک دوست کہہ لیں, شاگرد کہہ لیں, وہ کام کر رہا تھا وہاں پہ انگلینڈ میں. تو میں نے کہا آپ کس پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں کیپٹل پنشمنٹ پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. میں کہا کیپٹل پنشمنٹ کوئی فیلڈ نہیں ہے, آپ کا فیلڈ کون سا ہے؟ کہتے میں بتایا تو ہے کہ سزائے موت پہ ریسرچ کر رہا ہوں. بھائی سزائے موت پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو یہ تو بتاؤ فیلڈ کون سا. کہتے ہیں یار کیا مطلب, تم سے بات کرنے کا فائدہ کم ہوتا ہے, نقصان زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو اس کے اوپر لا والے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ کا لا کیسا ہونا چاہیے. اس کے اوپر ڈیولپمنٹ سائیکالوجی والے بھی کام کر رہے ہیں کہ جن بچوں کو سزائے موت ہوتی ہے ان کے ساتھ بچپن میں کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر سوشیالوجی والے بھی کام کرتے ہیں, جن کو سزائے موت ہوتی ہے ان کی خاندان کے ساتھ کیا بنتا ہے. اس کے اوپر اکانومسٹ بھی بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر پنشمنٹ تھیوری بھی کام کر رہی ہے. اس کے اوپر 10 لوگ کام کر رہے ہیں کہ جن ملکوں میں پھانسی کی سزا ہے اس کا جرم سے کیا تعلق ہے. کرمنالوجی والے بھی کام کر رہے ہیں. تمہارا فیلڈ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا فیلڈ جو لا ہے. میں نے کہا فیلڈ لا کے جو ہے نا یہ 115 جرنلز ہیں. اب تم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس سال کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر کیا چھاپا ہے. سو سلیکٹ یور کانسیپٹ. بالکل آپ کانسیپٹ چن لیں جو پسند ہے, پھر فیلڈ چن لیں, بالکل, یا فیلڈ چن لیں پھر کانسیپٹ چن لیں. جس دن آپ نے چن لیا اس دن آپ کی ریسرچ شروع ہو گئی. یہ ہے پہلا سر. یہ مشکل کام ہے, آسان کام ہے نا. تو بچوں کو ہم نہیں کہتے تم نے کس فیلڈ میں کام کرنا ہے. بھائی تم نے جس مرضی فیلڈ میں کام, جو تمہیں پسند ہے وہ فیلڈ بتاؤ. بس مجھے بتاؤ تمہیں یہ فیلڈ کیوں پسند ہے. اکڑ پکڑ بمبے بو کیا ہے کہ آپ نے کوئی لاجیکل پروسیس ہے. صحیح بات ہے. یہ ہے پہلا سٹیپ. ریسرچ آپ کر لیں, اس کے بعد اس کانسیپٹ کے بارے میں پڑھیں اور اس کے بعد آپ اس کانسیپٹ کے ایکسپرٹ ہیں. بالکل صحیح بات ہے. مطلب سب سے پہلے انسان کو اپنا ایریا آف انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. ایریا آف انٹرسٹ کو ہی ہم فیلڈ کہتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے شو میں آئے,
سب سے پہلے آپ میڈیا میں آئے لیکن اس کے بعد ہمارے شو میں. تھینک یو سو مچ. یہ میرے لیے اعزاز کی بات بھی ہے, مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی. خوشی اس وجہ سے بھی ہوئی, ایک پرسنلی بھی, کیونکہ میں خود مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں, مینجمنٹ پلس ڈاکٹر بھی ہوں. تو تھینک یو سو مچ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. سر میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی त सर मूंखे ॿुधाइजो त अॼुकल्ह जा शागिर्द जेके आहिनि उहे तहक़ीक़ जे हवाले सां तमामु ख़ौफ़ज़दा आहिनि त तहक़ीक़ न करणु खपे. असां उन हालांकि उन्हनि जो इंट्रस्ट हूंदो आहे, उन्हनि जी दिलचस्पी हूंदी आहे कंहिं फील्ड में, लेकिन उहो चाहींदा आहिनि त असां हिन में न वञूं छो जो हिन में तहक़ीक़ थींदी. उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो नंढिड़ो मैसेज पैगाम ॾियणु चाहींदो त तहक़ीक़ मुश्किल न आहे. बिल्कुलु अॼु जे नौजवान लाइ इहो पैगाम बुनियादी अॻु में अर्ज़ु कयो पंहिंजो शौक़ु रखी ऐं मुतालो कनि. जॾहिं मुतालो कंदा त मुताले मां हुननि खे राहूं मिली वेंदियूं. ऐं अॼुकल्ह पुराणे दौर या अॼोके दौर में वॾो फ़र्क़ु इहो आहे जो उन्हनि लाइ मवाद मौजूदु आहे, किताब जी सूरत में, लाइब्रेरी जी सूरत में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी सूरत में एॾियूं सहूलियतूं अची वियूं आहिनि जो शर्त सिर्फ़ु हिकिड़ो ई आहे त पंहिंजे शौक़ सां पंहिंजे शोबे जो इंतिख़ाबु कयो ऐं उनखे मुंतख़िब करे महिनत कयो. कामयाबी तव्हांजा क़दम चुमींदी. तव्हां जंहिं बि शोबे में शोबो मुंतख़िब कयो पंहिंजो शौक़ु वारो, जंहिंसां तव्हांखे लगन हुजे, जंहिंमें मवाद हुजे, पोइ तव्हां सभु कुझु करे सघो था. लेकिन शर्त इहो आहे शौक़ु हुअणु खपे जेको आहे बिल्कुलु लगन हुअणु बिल्कुलु खपे. सही ॻाल्हि आहे. बिल्कुलु नाज़रीन, तमामु बहितरीनु ॻाल्हि थी तहक़ीक़ जे हवाले सां. जीअं असांजो पहिरियों प्रोग्राम हुयो त तव्हांखे शोबो जेको आहे कहिड़ो ॻोल्हणु खपे, उन मां ई असां हिकिड़ो चूज़ कयोसीं त तहक़ीक़ यानी रिसर्च ते असां कहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि करे सघंदासीं. ऐं तमामु घणी शुक्रगुज़ार आहियां पंहिंजे महिमाननि जी. असां सां गॾु हुया प्रोफेसर डॉक्टर फैसल क़दीर ऐं उन खां अलावा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान जिस्काणी, तमामु बहितरीनु गेस्ट. ऐं ख़ासि जेके आहिनि असां वटि डॉक्टर फैसल क़दीर असां वटि आया, लाहौर मां ट्रैवल करे कराची आया ऐं फस्ट टाइम असांजी प्रोग्राम में उन्हनि शिरकत कई. ऐं शुक्रगुज़ार आहियां उन्हनि जी त सर असांजी प्रोग्राम में तव्हां शिरकत कई आहे. नाज़रीन, तहक़ीक़ जे हवाले सां आउं बि कुझु ॿुधाईंदी हलां त तहक़ीक़ जेका आहे उहा मुश्किल न आहे. तहक़ीक़ जेका आहे तव्हां कहिड़ी बि फील्ड में करे सघो था, कहिड़े बि शोबे में करे सघो था. ऐं उन जे हवाले सां तव्हां पंहिंजे उस्ताज़ा सां, पंहिंजे सुपरवाइज़र सां मशवरो करे सघो था. तहक़ीक़ जेका आहे उहा सोशल साइंसिस में बि थिए थी, नेचुरल साइंसिस में बि थिए थी. तहक़ीक़ जेका आहे उहा अदबी ॿोली में बि थिए थी ऐं उन खां अलावा केतिरनि ई अलॻि अलॻि फील्ड्स में बि थियनि थियूं. त इन जे हवाले सां तव्हांखे पंहिंजा सुपरवाइज़र सुठे नमूने सां गाइड करे सघनि था. तहक़ीक़ जेका हूंदी आहे उहा हिकिड़ी की वर्ड्स ते मुश्तमिल हूंदी आहे त तव्हांखे पंहिंजो एरिया ऑफ इंट्रस्ट कहिड़ो रखणु खपे, जेको तव्हांजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में तव्हांजे अॻियां जेके शयूं गुज़रनि थियूं उन्हनि खे ॾिसी करे तव्हां ॾिसो त तव्हांजो एरिया ऑफ इंट्रस्ट, तव्हांजी दिलचस्पी कहिड़ी शइ में आहे, उन जे हिसाब सां पंहिंजो उनवान खे ॾिसो ऐं उनवान जेको आहे पंहिंजे सुपरवाइज़र सां मशवरो कयो. नाज़रीन, ईअं ई दिलचस्प उनवाननि सां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थींदासीं हर अरबा ते 4 खां 5 बजे ताईं लाइव PTV नेशनल ते. उन खां अलावा तव्हां सां इहा बि गुज़ारिश आहे त असांजे सोशल मीडिया पेजिस खे लाइक कयो, शेयर कयो ऐं सब्सक्राइब कयो, छो जो असां हिन प्रोग्राम जे वसीले सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हांखे हिकिड़ो शऊर ॾियणु चाहियूं था, हिकिड़ी अवेयरनेस ॾियणु चाहियूं था त तव्हांखे पंहिंजे हिसाब सां तालीम जे मयार खे कहिड़े नमूने सां बहितर बणाइणु खपे, तव्हांखे कहिड़ी फील्ड में वञणु खपे ऐं उन फील्ड में अगरि रिसर्च आहे त उहा मुश्किल न आहे जेसि ताईं तव्हां वटि हिकिड़ी सुठी गाइडेंस मौजूदु आहे. त नाज़रीन, ईअं ई नेक्स्ट वीक अगली अरबा ते 4 खां 5 बजे ताईं तव्हांजे साम्हूं हाज़िर हूंदासीं. पंहिंजी मेज़बान डॉक्टर कंवल मेमण खे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजो तमामु भरपूर ख़्यालु रखंदा ऐं मुंहिंजी टीम सॼी खे इजाज़त ॾींदा.